Good morning, dear students. As I told you last time, we'll be starting now with the topic gynoecium and formation of the female gametophyte. So, here we talk about how the female gametophyte is formed and what is gynoecium. So, this we've already discussed that there are three parts of what we call as pistil or carpel, the stigma, style, and the ovary. Now, you know each one of them, all these parts, they are the reproductive structures, and there may be present more than one carpels or pistil in the flower, and if there is only single, it is called monocarpellary, but if there are many, they are called as multicarpellary. In multicarpellary condition, there can be syncarpous or apocarpous condition. Syncarpous means in which the pistils are fused, or they can be free, called as apocarpous. Now, each pistil consists of stigma, style, ovary. Now, you here can see the stigma, which is the receptor for the pollen grains, which is the flattened structure on the top of the pistil. Then there is a tubular structure called as the, and at the base of this pistil lies the ovary. Now this ovary, it is present inside the, here, this is the basal part, which is the सबसे bottom वाला part है of the pistil, and इनके बीच में ovary में present रहते हैं the ovarian locule, जिसे हम कहते हैं cavity. इनके साथ ही यहाँ पर बीच में ओवरी में प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं थ्रू द प्लेसेंटा. About placenta we have discussed in class 11th also, so you know that there are different kinds of placentations which may be present. Now we'll be seeing the structure here for the multicarpellary, syncarpous and apocarpous ovary. So here what you can see is the syncarpous, that is fused, the pistils are fused, while here the pistils, the carpels are free. So this is the condition that we call as syncarpous, while this is the apocarpous ovary. Now, this is the example of syncarpous, which is present in papaver somniferum, called as poppy. And mycelia, it is the multicarpellary condition that we call as the apocarpous, that is free carpels. Now, this we have discussed just now. Now we're going to discuss next about the megasporangium or the ovule. Now, the megasporangium or the ovule that we are going to talk about here. Now, this is a very important structure which is formed inside the ovary. It is a structure which is attached through the placenta. Now, here we'll be talking about the different parts of the ovule and the parts through which it is attached. First of all, let's talk about funicle. Now, as we can read here, the ovule is attached to the placenta by this part that is called as funicle. Now, each ovule, this ovule which is present in the center, which is also called the embryo sac, is attached through this to, this has the two integuments. These are the layers which protect the ovule. Now, there is a chalazal end. This chalazal end lies opposite to the micropylar end. So, the opposite side is micropylar end, while on the other side is the chalazal end. Micropylar वो end है जहां से कि क्या होगा, यहाँ पर माइक्रोपाइल, यहाँ पर एक पोर प्रेजेंट है माइक्रोपाइल, तो दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड, और उसके ऑपोजिट साइड में जो रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द चेलेजल एंड. इसके साथ ही आ जाता है न्यूसेलस. न्यूसेलस क्या है, इंटैग्यूमेंट्स के अंदर एक और मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जो कि फूड रिजर्व करता है, फूड मटेरियल रहता है जिसके पास फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द ओव्यूल. नाउ नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट the megasporogenesis. Now, what is megasporogenesis? Megasporogenesis is the formation of megaspore from the megaspore mother cell. Megaspore mother cell is represented by capital MMC, and it is large and contains a dense cytoplasm and prominent nucleus. It undergoes meiosis to produce 4 megaspores. We discussed about microsporogenesis in the previous video, and you know that even the microspore mother cell, which is represented by small MMC, it also produces 4 microspores. But these 4 microspores then give rise to pollen grains. But here there is monosporic development, because after meiosis 3 of the megaspores degenerate and there will be only one functional megaspore which will give rise to the functional gametophyte. Now, megasporogenesis, diagrammatically we can represent it like this. Now, here there is the presence of the megaspore mother cell which undergoes meiosis, which produces the megaspore dyad and then the tetrad. But out of this, 3 will degenerate and there will be only one cell which will be left, which will be the megaspore. And this will now turn into the gametophyte. Now, this will undergo the free nuclear divisions in which the nuclei will be produced. 8 nuclei will be produced, and which then will be covered by the cell walls. 7 of these will be covered by the cell walls, and 1
one cell, that is central cell, will then have the two polar nuclei. So that means other all are having the ploidy of N, that is haploid, while here the polar nuclei 2 are present. So this will be not 2N, it will be N plus N, because two separate nuclei are present here. So this is called N plus N condition in the central cell. Now, let's discuss about this female gametophyte. Female gametophyte, which is the ovule or the embryo sac as we talked about. It has these three antipodal cells on the chalazial end. Then this is the central cell, which contains the two nuclei, which are called the polar nuclei. The egg cell, which will fuse to give rise to the zygote, and two synergids. Along with this, there is present at the micropylar end the filiform apparatus, which helps in the entry of the pollen tube. Now, because it has 7 cells, it is 3 antipodals, 2 synergids, 5, 1 egg cell, 6, and 1 central cell. It is called 7-celled, but it is 8 nucleated because of the presence of 2 nuclei inside the central cell. Now, next we'll talk about the synergids. We were talking that they have this thickening at the micropylar end, and this is called the filiform apparatus. It helps in leading the pollen tubes into the synergids. Now, pollination. Now, pollination is the process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma. Now, there are two types of pollination, as you all know, self and cross. Self-pollination, now we'll be talking that it is further of two types, autogamy and geitonogamy. While the other type of cross-pollination that we call as xenogamy. Now, self-pollination, that is अपने आप एक ही प्लांट के सेम फ्लावर में या दो अलग अलग फ्लावर्स लेकिन सेम प्लांट के होने चाहिए. सेल्फ का मतलब है प्लांट एक ही है, तो इट कैन बी वन सिंगल फ्लावर. इफ इट इज ओनली वन फ्लावर देन इट इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी. बट इफ देयर आर टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, तो जेनेटिकली तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, देन इट इज कॉल्ड एज गिटोनोगेमी. क्रॉस पॉलिनेशन के अलग अलग एजेंसीज हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन होगा, जिनमें अबायोटिक एजेंसीज दैट इज नॉन लिविंग हो सकता है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. इफ इट इज बाय विंड, it is called anemophily. If it is by water, it is called hydrophily. If it is with the help of insects, it's called entomophily. If it is with the help of bats, it is called chiropterophily. If it is with snails, it is called malacophily, or with birds called as ornithophily. Now we'll be discussing about now the differences between self and cross pollination. Self pollination occurs in the same flower or between two flowers of the same plant, as we discussed. Autogamy in the same flower, or geitonogamy if there are two different flowers of the same plant. But cross pollination occurs. Cross pollination किन में होता है? दो flowers हैं और दो अलग अलग plants पर present है, then it is called as cross pollination. Self pollination usually blooming से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि blooming होगा, अगर flower खिल रहा है तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, there are chances of cross pollination. तो self pollination blooming से पहले ही हो जाता है, लेकिन cross pollination हमेशा blooming के बाद होगा. यहाँ पर कोई भी और स्पीशीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही प्लांट अपने आप ही अपनी पॉलिनेशन कर रहा है, तो किसी और की जरूरत नहीं है. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अलग प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर रिक्वायर्ड. यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंसीज की रिक्वायरमेंट नहीं है. गिटोनोगेमी में हो सकती है, लेकिन वो भी बहुत कम. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन टोटली डिपेंडेंट है ऑन द पॉलिनेटिंग एजेंट्स. सेल्फ पॉलिनेशन में प्योरिटी ऑफ द स्पीशीज जो है वो प्रिजर्व रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि जेनेटिकली सेम प्लांट के अंदर ही हो रहा है, सो यहाँ पर कोई भी वेरिएशंस इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं. जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में ऑब्वियसली टू डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो यहाँ पर प्योरिटी मेंटेन नहीं होती है. न्यू वैरायटी कोई डेवलप नहीं होती सेल्फ पॉलिनेशन में. क्रॉस पॉलिनेशन में वैरायटीज डेवलप होती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होंगी, तो न्यू वैरायटीज विल बी डेवलप्ड. Now, depending on the source of the pollen, pollination can be as follows, like we discussed autogamy, we discussed just now. Now, conditions for autogamy. क्या क्या conditions हैं autogamy के लिए? एंथर एंड स्टिग्मा, इन दोनों को बिल्कुल क्लोज होना चाहिए ताकि पोलन ग्रेन्स इजीली फॉल हो सके स्टिग्मा पर. और पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आपस में सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि पोलन ग्रेन पहले मैच्योर हो गया, स्टिग्मा बाद में मैच्योर हो रहा है, सो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड बी इन सिंक्रोनी. नेक्स्ट इज ऑटोगेमी दैट वी वर डिस्कसिंग. इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, हमने अभी डिस्कस किया. इसके एग्जांपल्स हैं वायोला और ऑक्जेलिस. इनमें दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैस्मोगेमिस एंड अनदर वन इज क्लीस्टोगेमिस. कैस्मोगेमिस जिसमें कि एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा है, सो ऑब्वियसली दिस विल प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन. जबकि क्लीस्टोगेमिस क्या है, जो कि पूरी तरह से ओपन होते ही नहीं कभी भी, और इनमें सिर्फ ऑटोगेमी होता है. सो हियर यू कैन सी नाउ नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज गिटोनोगेमी.
गिटोनोगेमी भी सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन सेम फ्लावर में नहीं होता है, बल्कि 2 डिफरेंट फ्लावर्स में होता है ऑफ द सेम प्लांट. Next, we are going to talk about xenogamy or what we call as cross pollination. So cross pollination में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक हम पढ़ रहे थे एक ही फ्लावर में या एक ही प्लांट में. Now we are going to discuss about genetically different pollen grains इकट्ठे आ रहे हैं through cross pollination. अब यहाँ हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अलग अलग एजेंसी से हो सकता है. Now we are going to discuss them in detail. So अब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम पॉलिनेशन बाय विंड. Now this is called anemophily as we discussed. तो यहाँ पर ये बहुत ही कॉमन, सबसे कॉमन फॉर्म है अबायोटिक पॉलिनेशन का. प्लांट्स जो है इसमें स्टेमन जो होता है उनके लार्ज होते हैं और फेदरी स्टिग्मा होता है. ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं स्टेमन लार्ज है क्यों, ताकि विंड के थ्रू इजीली कैरी हो सके जो उनके पोलन ग्रेन्स हैं. साथ ही यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं पोलन्स जो हैं वो लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर एक सिंगल ओव्यूल होता है यूजुअली ओवरी में, और बहुत सारे इनके अंदर इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में पैक्ड होते हैं जो इनके फ्लावर्स होते हैं. जैसे कि कॉर्नकॉब या ग्रास फैमिली जो है यूजुअली इट रिप्रोड्यूसेस बाय विंड पॉलिनेशन. तो यहाँ आप देख सकते हैं, सो दीज आर द फेदरी, यहाँ पर बहुत फेदरी स्टिग्मा यहाँ पर होता है, एंड देन बिकॉज ऑफ दिस फेदरी स्टिग्मा इजिली पोलन ग्रेन्स को वो कैच कर सकते हैं. Then next we are discussing the pollination by water. Although water aquatic plants जितने भी होते हैं वो वाटर में ग्रो करने के बावजूद उनमें ज्यादातर में हाइड्रोफिली बहुत सारे प्लांट्स में नहीं होती है. कुछ ही प्लांट्स के अंदर आपको हाइड्रोफिली मिलेगा, जैसे कि वेलेस्नेरिया और हाइड्रिला. इनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं और उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, ऑब्वियसली टू प्रोटेक्ट देम, बिकॉज वाटर में रह रहे हैं, सो उनका दे माइट बी डेड, सो उनको बचाने के लिए देयर इज दिस कवरिंग ऑफ म्यूसिलेज. नेक्स्ट इज वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली. जितने भी प्लांट्स हैं यूजुअली ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं. कैसे? बिकॉज इनके फ्लावर्स दे आर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी, तो ऊपर आ जाते हैं और अट्रैक्ट करते हैं. आपने जैसे देखा भी होगा तो वाटर हाइसिंथ हमने पहले भी डिस्कस किया इसके बारे में, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से इसको, आइशोनिया जिसे हम कहते हैं. सो ये जो है पॉलिनेट होते हैं थ्रू इंसेक्ट्स, ऑल्दो दे आर एक्वाटिक बट स्टिल दे आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड. Now pollination by animals. Majority of the flowering plants use butterflies, bees, wasps for pollination. और जो insect pollinated flowers हैं, they are large, colorful, fragrant होते हैं. इनमें floral rewards दिए जाते हैं, मतलब जितने भी pollinator आ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ reward दिया जाएगा. किस फॉर्म में? या तो उनको nectar की फॉर्म में दिया जाएगा, या फिर उनको they can be given in the form of, उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं सेफ प्लेस. द फ्लावर कैन प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग. द एग्जांपल इज अमोर्फोफिलिस, जिसमें कि बहुत ही लार्ज एक फ्लावर प्रोड्यूस होता है जिसमें जो इंसेक्ट्स हैं दे कैन ले एग्स. द पोलन ग्रेन्स, इस केस में पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं ताकि वो इजिली स्टिक कर सकें टू द बॉडी ऑफ द पॉलिनेटर. नाउ पॉलिनेशन बाय एनिमल्स. नाउ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है बिटवीन यका एंड इट्स पॉलिनेटर मॉथ. द मॉथ इज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट, क्योंकि ये उसके लोक्यूल ऑफ द ओवरी के अंदर अपने एग्स जो है वो ले करता है और इसके बदले में पॉलिनेशन करता है फॉर द प्लांट. सो दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप कॉल्ड एज सिम्बायोसिस. अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? आउटब्रीडिंग का मतलब है प्लांट्स हमेशा प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को. जैसे आपको पता है हमेशा वेरिएशंस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि वेरिएशन से ऑब्वियसली अडेप्टेशन इंक्रीज होगा, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे. सो इवन प्लांट्स के अंदर भी मेथड्स हैं जिनसे कि वो प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, उन्हीं को हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. तो ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहला तरीका है कि पोलन ग्रेन, पोलन का जो रिलीज है, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे. जैसे हमने कहा कि सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए, तो अगर सिंक्रोनाइज्ड नहीं है दैट मींस द प्लांट इज प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन. अलग अलग पोजीशनिंग है, मतलब पोजीशनिंग इन द सेंस कि एंथर ऊपर होने की बजाय एंथर नीचे है, स्टिग्मा ऊपर है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर बीच में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा. देन यूनिसेक्सुअलिटी, पपाया, कुकुम्बर, वाटरमेलन, इनमें यूनिसेक्सुअलिटी है, मतलब जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग में है, फीमेल अलग में, तो ऑब्वियसली उनमें भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता. या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें अपने पोलन ग्रेन्स अपने ही स्टिग्मा पर या तो पोलन ट्यूब नहीं जर्मिनेट कर पाते हैं या फिर वहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है. नाउ ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों को प्रिवेंट किया जाता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ डायोशियस, दैट इज यहाँ पर यूनिसेक्सुअलिटी को इंश्योर करके. और जैसे हमने एग्जांपल्स हमने रीड किए पपाया, कुकुम्बर, वाटरमेलन में, यू विल बी फाइंडिंग दिस आउटब्रीडिंग डिवाइस.
We'll be discussing about the next topics in the next video. Thank you. God bless you.